Hello students, welcome again. Standard 3. Subject looking around, environment. And today I'm going to explain you again a new chapter of your workbook. Chapter 7 and the chapter name is Saying Without Speaking. Student, can you imagine saying without speaking? किसी को बोले बिना अपना सोचा हुआ कोई भी बात किसी को समझाना, अंडरस्टैंड करना, इज इट पॉसिबल? हाउ इट इज़? हम लोग किसी को अपनी बातें बोल के समझाते हैं, अब बोलने बिना हम लोग को अपनी बातें समझानी हो तो कैसे पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल विथ योर एक्शन. हम लोग को हमारी बातें जो किसी को समझानी हो बोले बगैर, तो हमें अपने एक्शन के द्वारा अपनी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो द चैप्टर नेम इज सेइंग विदाउट स्पीकिंग. नाउ सी योर वर्कबुक. Question number 1. Choose the correct alternatives from those given below each question and write its index letter, letter means alphabets, in the box provided against each question. Now see the question number 1. What are people who cannot speak and hear known as? जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? C1 deaf mute. So write the C in your box. C1 is a right answer. Second question. How do people who cannot talk communicate? B. With gesture. So write the B is your right answer of second. Third number. How does a 4-month-old infant communicate? So जो छोटे बच्चे होते हैं 4 month old होते हैं, वो लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बताते हैं कि आई एम हंग्री? तो D1 is the right answer, by laughing and crying. If they are happy, they will laugh, and if they are not happy, they are sad, they have some problem, so they will start crying. 4 number question. If your toy breaks while playing, what types of expressions will be there on your face? अगर खेलते खेलते हमारा कोई टॉय, हमारा कोई खिलौना टूट जाए तो हम लोग क्या हैप्पी होंगे? नो. सो B1 इज द राइट आंसर. अ सैड एक्सप्रेशन, हम लोग का एक्सप्रेशन कैसा होगा? सैड होगा. 5 क्वेश्चन. बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी नो वेदर अ पर्सन इज हैप्पी और सैड? ए. द फेस. सो फेस के एक्सप्रेशन से हम लोग को पता चलता है कि जो पर्सन है वो हैप्पी है और सैड है. क्वेश्चन नंबर 6. Which 2 birds came to the squirrel's party? कौन से 2 बर्ड थे जो स्क्विरल पार्टी में आए थे? The C1 is the right answer. Manna and crow. Now come on, question number 2. Fill in the blanks in each sentence with an approximate word. First number. A deaf mute can understand what another person is saying by reading the movement of his and her lips. कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग? लिप्स से. क्वेश्चन नंबर 2. हैंड gesture and facial expressions is dance are known as mudra. Third number. A 4-footed creature known as rat came to the squirrel's party. Question number 4. Blanks 4. If a child has done any mischief, it can easily be made out due to the expression of his and her face. कोई भी बच्चा जो मिसचीफ करता है तो हम लोग को किस तरह से पता चलता है? उसके फेस के एक्सप्रेशन से. क्वेश्चन नंबर ब्लैंक्स 5. A person's feelings can easy by seen in the eyes.
on a person's face. Now see the sixth number. Deaf mute children are taught to speak with gesture in a special school meant from them. Now come on, your workbook page number 57. Question number 3. Put a tick marks in the front of the statement that are true and a cross in the front of those that are false. So this is your true false. Let's see the first sentence. People who can talk communicate with gesture of their eyes. No, wrong. So first one is a wrong sentence. Second, there are special school for the deaf mute and the blind. Yes, जो लोग म्यूट होते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं और जो लोग देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल होती है. थर्ड सेंटेंस, डेफ म्यूट चिल्ड्रंस कैनॉट स्पीक बट कैन हियर. नो, जो डेफ म्यूट होते हैं वो लोग बोल नहीं सकते हैं, सो दे कांट स्पीक and can't hear. So this is the wrong sentence. 4. Facial expressions are the main aspect of dance. Yes, facial expression क्या होता है? Main part होता है हमारे dance का. So 4 one is a right sentence. 5. A 4-month-old child talks loudly. No, it's wrong. क्या 4 महीने का बच्चा बहुत जोर से बोल सकता है? No. So 5th one is a wrong. Sixth number. Whether a person is happy or sad can be known by his or her facial expression. Yes, हमारे face के जो expression होते हैं उससे हम लोग को सामने वाले को पता चल जाता है कि जो person है, हम लोग है कि happy है और sad है. So yes, this is the right sentence. So take out right. Now see the question number 4. Match the column approximately. Column A and column B is given here. In between is the answer. So write the answer in a alphabets. So first one is a blind. C. Person who cannot see. Blind किसको बोलते हैं? जो देख नहीं सकते हैं. A person who cannot see. Second one, deaf mute. So E. A person who can either speak nor hear. जो बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं. Third number, mentally retarded. A. Intellectual disability. 4. Handicapped. Handicapped किसको बोलते हैं? B1. Person with a deformity in some body part. That is called handicap. Now come on, next question. Question number 6. Your page number is 58. Answer the following question in one or two sentences. So first question is, have you ever seen anyone talking through action? क्या तुमने किसी को देखा है जो एक्शन के साथ बात करते हुए? Yes, I have seen actor or stage communication through action. Second number question. According to the story in the textbook, which defect did Chaku have? In what was the skilled? According to the story in the textbook, Chaku was deaf. She was skilled in playing the piano. Third number question. What was the name of Chaku's brother? Chaku's brother name was Nandu. Question number 4. How does a person who cannot talk communicate with other person? A person who cannot talk communicates with his or her eye, facial expression and gesture of the hand with other person.
जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग दूसरे के साथ, दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, अपने आई के एक्सप्रेशन से, फेस के एक्सप्रेशन से और हाथ के एक्सप्रेशन से. Question number 5. What can we understand with the expression on a person's face? So answer is we can understand whether a person is happy, sad or angry. Face के expression से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक इंसान जो है वो happy है, sad है कि anger है. Question number 6. What are known as mudras in dance? Facial expression and gesture of the hand are known as mudra in dance. Now see the question number 7. Answer the following question in brief. First number, which type of deformities are seen in peoples? Answer, deformities like blindness, deaf mute, crippled in the leg and hand, mental retardations and learning disabilities are seen in the peoples. So किस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ इंसान में हम लोग को देखने को मिलती है? जो लोग अपंग होते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, डिफ म्यूट होते हैं, क्रिप्ड होते हैं, किसके पैर हाथ में कोई फॉल्ट होता है, मेंटली इलनेस होते हैं, इस तरह के हम लोग को प्रॉब्लम्स इंसानों में देखने को मिलते हैं, जिन लोग में कुछ भी डिफ़ॉल्ट होते हैं पर्सन में. ओके, सो दोज आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड. क्वेश्चन नंबर 2. वाई कैन द पुलिस कैच अ culprits during their investigations even when the culprit denies his and her crime? Answer, even when the culprit denies his and her crime, the police can catch a culprit during their investigations with the help of the expression of fear on their faces. Now come on your workbook, page number 61. Answer the following questions by finding the correct answer option from those given below each question and writing the corresponding letter in the box given in front of each question. So first question is, in which category of deformity is a child who cannot hear or speak from birth included? So C1, डेफ्ट म्यूट, उसको क्या बोलते हैं? डेफ्ट म्यूट के बोलते हैं. सेकेंड वन, इन what are gesture of the hand and facial expression important? किस में important है? डांस में. So B1 in dance. Third question, what can be understand from the facial expression of a person? पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग को क्या समझ में आता है? यस, ए, whether the person is happy or angry or sad also. So the first one is option is right, whether the person is happy or angry or anger. Question number 4. Which sense is seen as more important in deformed children than in normal children? So the B1 is concentrations. So default जो चिल्ड्रन होते हैं, जो लोग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उन लोग के बिटवीन जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, उन लोग में किस तरह के चेंजेस, डिफॉल्ट किस तरह के सेंस में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशंस, उन लोग में कॉन्सेंट्रेशंस के चेंजेस देखने को मिलते हैं. 5 क्वेश्चन, व्हेन मदर रिटर्न इन द इवनिंग शी सॉ Meet sitting quietly and writing, but at the same time he was looking at his mother with quick side glance. So mother looked at the Meet's face and guessed that. What she guessed? She guessed C1 is the right answer. Meet has done some mischief after coming home.
So meat was did some mischief. So C1 is the right answer. So my dear student, hope you all understood this. Complete your workbook and learn all the given question answer of your workbook. Bye bye. Take care.